कॉर्पोरेट टैक्स रे रिहाती देवा पई घोषणा करिसंते केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। जीएसटी काउंसिल बैठक पूर्व ए घोषणा करिसंते अर्थमंत्री। कैपिटल गेन उपरे सरचार्ज को कम कर दिया जायछि। कंपनी पई नुआ कॉर्पोरेट टैक्स मध्ये घोषणा करा जायछि। Today we are probably one of the lowest and at par with the lowest in Southeast Asian countries. So I would like to again sort of remind the rate at which we are now going to tax is 22%, and then for the oldest established companies, for the newer investments which are coming, 15% is what the slab is, the rate is. And therefore, when you calculate and other things, added surcharge and all that, you have different decimal points also getting added. But it is 22 and 15. 22 for existing and 15 for those who are coming in who will manufacture before 23. So that itself, 22 and 15 are the two numbers which I would like to drive home. 22 and 15 are going to now draw more. We give. For example, an unit is located in SEZ, or somebody is getting an accelerated depreciation. Somebody is spending in the R&D and some other fund. So in such cases, the companies who are such placed that after availing the such tax exemptions and deductions, if their tax rate comes less than 22%, then that company would not opt for this. However, those companies which are not claiming any deductions, so today they are also paying 30% tax rate. So now they will be taxed at only 22%. And so far as the new manufacturing companies are concerned, there the basic tax rate is 15%. Yeah, similar. That is why I said if you don't use any of the exemptions given, you're eligible for 22. Right? I would just like to add here that those companies who are using exemptions, and as announced by Madam just now, that let us say their exemption period is over. Sometimes exemptions are given, certain deductions are given for certain number of years. So once that period is over, then that same company can switch to this new tax regime and pay at 22%. So the moment the expiry happens, you can opt to come into this and benefit from 22%. Ma'am, I'm asking you a local question. Basically, Goa economy is also slowed down because of iron ore mining has come to a halt. It was Goa was exporting highest in the country. So anything you are looking at it restarting of mining activities in the state? Well, on that I know there was a group of ministers who have met. In fact, the Chief Minister of Goa had come and participated in it. So the group of ministers have made some progress and they are discussing with a keen interest to restore something for Goa. So that is definitely on the agenda. Ma'am, what is the effective rate of corporate tax today? One. Two, these incentives for the new manufacturing companies, is it open-ended or is there a period for which it is available? Is there a sunset period? And three, are we sticking to the fiscal deficit target that you have fixed for this year, despite all you've announced a lot of measures which will have spending as well as tax implications. So are we sticking to the target for the year? First of all, on the fiscal deficit, Yes, sir. I can see each one of you really adding that as one another question that you want to ask. Yes, we are conscious of the impact all this will have on our fiscal deficit. And also earlier once, I remember one of you asking me, you had mentioned different rates in the budget time on the nominal GDP growth. Now, therefore, the numbers are different now. How are you going to look at it? We have quite ceased of all these details. We will be, as I said earlier, we will be taking all of them on board to reconcile as to how the situation is now and how we want to take it forward. We are not oblivious of these developments. And as regards the real, rate, effective rate, the current effective rate and these rates, I'll request the Revenue Secretary to detail it out for you.
No sunset. Yes. I will just like to So in other words, open-ended. mention here that in India we had a current corporate tax rate was 30%. Now that rate has been brought down to 22%. Similarly, for new manufacturing companies, the tax rate was 25%. Now that has been brought down to 15%. So this is the major tax reduction which has happened from 30% to 22%, from 25% to 15%, and also one very important thing, that is the MAT rate, current MAT rate. The company which will be taxed at the rate of 22% will not have to pay any MAT because they would not claim any exemptions. Because earlier regime, one used to hear that whenever you have a lower tax rate, then in that or a certain exemptions, then one ended up paying minimum alternate tax MAT, and that used to be 18.5% plus surcharge. Now that rate has been rate has been brought down to 15%. So this is the extent and magnitude of the tax cut which has happened. Yes, the effective rate. So let us say a company who was in the 30% tax bracket. Now 30% tax bracket along with the surcharge, it was going up to 34.94%. Now, because the basic rate itself has been brought down to 22%, then along with the surcharge, and we have also brought down the surcharge from 12% to 10% there. So this 22% basic rate and along with the surcharge, the effective rate is only 25%, 25.17%. So there also it is approximately 10 percentage basis points from 34.94% to 25.17, almost 10% basis points that has been brought down. Now, so far as the new manufacturing companies are concerned, there the basic tax rate used to be 25, and there along with the surcharge and cess, it used to go up to 29.12%. Now, for the new manufacturing company which gets incorporated after 1st October 2019 And starts manufacturing before 23. March 23, the basic rate itself has been brought down by 10%, that is 15%. That along with the surcharge will pay only 17.01%, and so there the decrease is 12% basis point, 12% basis point. So in the effective rate, the reduction for the most of the companies, the entire corporate world, which do not take any exemption, the percentage basis reduction is almost 10%. For the new manufacturing company, the percentage reduction basis is 12%, more than 12%. So far the MAT is concerned, the earlier MAT rate was 18.5%, and that along with the surcharge again used to go between 21 and 22% depending upon what was the tax, what was the tax volume. Now that basic MAT rate itself has been reduced to 15, so that along with the surcharge is again coming somewhere around 17%. ଗୋଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଜି ଜିଏସ୍ଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା କାଉନସିଲ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ହ୍ରାସ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହା 30% थिला 30% थिला ताको ह्रास करा जाई 22% करा जाउछि एवं न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गुड़िक बा नूतन कंपनी जे गुड़िक उद्योग क्षेत्र रे आसुछन्ते मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे से गुड़िक पूर्व 25% टैक्स दउथिले जहाको 15% करा जाउछि एवं 25% से सरचार्ज मध्ये दउथिले एवं
जहाँ पाखापाखि 29% पर्यंत पहुंचुला एवं एबे ताहा 15% को ह्रास करा जायछि एवं सरचार्ज सहित ताहा 17.01% को आसुछि एवं पाखापाखि 12% रो बेसिस पॉइंट रे ह्रास रहुछि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पई एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र पई खूब गुरुत्वपूर्ण रहिबो एवं आर्थिक मंदावस्था क्षेत्र रे बा जो फिजिकल डेफिसिट बा वित्तीय नियंत्रण कथा वर्तमान समय चली से संपर्क में सांबादिकों प्रश्नर उत्तर रखिंट अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण से कहते जे खूब शीघ्र मंदावस्था दूरे जीव केंद्र सरकार व्यापक योजना एथि हाथ को नौछंती including derivatives in the hands of foreign portfolio investors. Shall I move to the next? In order to provide relief to listed companies which have already made a public announcement, I repeat, in order to provide relief to listed companies which have already made एवं गुरुत्वपूर्ण कथा होछि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कर ए घोषणा परे एपटे शेयर बाजार रे खूब उत्साह परिलक्षित होइछि आज सेंसेक्स मध्य उन्नति कराणी ए संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित बाजार विशेषज्ञ त्रिनाथ लेंका जोड़ी होइछन्ति श्रीयुत लेंका स्वागत करुछि तो कॉर्पोरेट टैक्स क्षेत्र में 30% रु 22% को ह्रास करा जाउछि एवं न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गुड़िक जो गुड़िक पूर्व 25% थिला टैक्स एपरिक सरचार्ज विषय जो गुड़िक 29% पर्यंत टैक्स दौले ताकू 15% को अणाई सरचार्ज मिसिले वर्तमान समय 17.01% होछि तेणु आर्थिक मंदावस्था दूर पाई ये गोटे बड़ घोषणा बोली कह जाई कि एवं कॉर्पोरेट टैक्स ह्रास देशर अर्थनीति को सुधारिबार केते सहायक होई परिबो निश्चय आम जो देखा केतेटा मेजर्स आम आगुरी एक्सपेक्ट करूँ जोटा कि बर्तमान आर्थिक मंदावस्था दे आम जो बर्तमान गति करुचे भारत अर्थनीति यही सब भाया किसी बड़ मेजर्स आसिले ही इकोनॉमी की बूस्ट कर बर्तमान जो आज आम फाइनेंस मिनिस्टर जोटा कि एक्सपेक्ट आगुरी बड़ बड़ मेजर्स नेला बर्तमान जो मेजर्स नहीं जो 30% को 22% को आनिबा आगुर जोटा कि 34.9% पड़ूला जोटा कि जो बड़ कंपनी से टैक्स दौले विथ सरचार्ज सेटा बर्तमान पलि आसला 22% एवं विथ सरचार्ज आसला 25.17% को पलि आसला एटा होती गोटे बड़ बूस्ट आसला इकोनॉमी ता सहित आपनकर जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मन अछंती सेमान जो 25% सेमान जो कॉर्पोरेट टैक्स दौले सेटा बर्तमान रिड्यूस करले 15% को जोटा कि आगुरु 25% प्लस सरचार्ज नहीं पाखे 29.12% टैक्स टिकस पड़ूला बर्तमान से रिड्यूस हो गला अप टू 17.01% और ता सहित आप देखिए विथ सरचार्ज जो मैंने दौरान जो मैंने बेनिफिट आपंकर जहाँ भी नौ ना जो मैंने अदर एक्जेम्पशन और इनसेंटिव जो मैंने पाँच जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जोटा कि 18.6% था सेटा को से रिड्यूस कर 15% ये हिसाब से आम जब बर्तमान देखा से भी बर्तमान सरकार गोटे बोझ भी आसो जोटा कि टिकस जो कटिला ता सहित भी बर्तमान ये सब मेजर्स निहाती दरकार भी थिला तेणु कंपनी मानू से सस्टेन करने जो टिकस बोझ सहित जी प्रॉफिट से देखिए शेयर बाजार में उत्साह परिलक्षित होती कॉर्पोरेट टैक्स ह्रास संपर्क में घोषणा जो समय से समय बाजार में उन्नति परिलक्षित है जीएसटी काउंसिल बैठक बसवाई जाऊँगी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किछिटा रिहाती दि जाई पारे कि एवं ता सहित अन्य किसी क्षेत्र में जो आर्थिक मंदावस्था देखा देछि मुकाबला करने जीएसटी ह्रास अन्य कौन क्षेत्र में आप संभावना देखुं कि जीएसटी बर्तमान आम ऑटो सेक्टर रे किछि लागुनी जे से जीएसटी नहीं ऑटोमोबाइल देखंतु रियल एस्टेट देखंतु अन्य किसी क्षेत्र में आसी पारे कि जीएसटी रिहाती नहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर रे बर्तमान मते लागुनी जे से माने किछि कट करिवे कारण एक्सपेक्टेशन अछि किंतु एथिरे मते लागुछि जे से ऑटो सेक्टर रे किछि से माने कट करिवे बोली जीएसटी लागुछि किंतु अदर सेक्टर जो मैंने सब रुग्ण अच्छे किसी बूस्ट दे पारती कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर अलरेडी से जी बूस्ट दौरान एमएसएमई बर्तमान कहते एमएसएमई सेक्टर जो मैंने अच्छा से टिकस को सब जो एनपीए भी देखिए जो 28% अच्छे ऑटोमोबाइल शिल्प क्षेत्र में अति छोट साधारण कार गुड़ को छाड़देला टिके जब लग्जरीयस गाड़ी आप नौकरी ताले 28% पर्यंत रोचे वर्तमान समय 10 लाख टंकार गोटे कार किणिले आपको 2,80,000 टंका टैक्स देवाई पड़ो गोटे पटे आर्थिक मंदावस्था कर्मचारी छटई होची कार कंपनी गुड़िक
सेमानकर मैन्युफैक्चरिंग बंद करूछन्ते से समय 28% टैक्स याकू जदि सरकार ह्रास न करूछन्ते ताले सांघातिक सिचुएशन आगु को आसी पारे। निश्चय जदि आपण जदि बर्तमान गोटे देखा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो मानवस्था देखा किंतु यही गोटे पॉजिटिव सिग्नल आसी मारुति पाखापाखि 10 लाख गाड़ी से एक्सपोर्ट कर जोटा कि से गोटे पॉजिटिव सिग्नल आसी एक्सपोर्ट हिसाब से बट इंटरनल आम जो देखा डोमेस्टिक यूज रे भी बर्तमान शिथिलता देखा तेणु से हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर रे आई डोंट नो आज तो जीएसटी काउंसिल बैठक में डिसाइड करेंगे किंतु मत लगुनि किसी कटौती देवे बोली कारण ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है अदर जो सेक्टर अच्छे से सब ये लगुच किसी पारती बुस्ट जोटा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनी अच्छा से जो सेक्टर जो कम करुँच से बुस्ट देवाई मत लगुच जीएसटी काउंसिल बैठक में और से सब को लेकिन आम शेयर बाजार भी बर्तमान उत्साह परिलक्षित देखा गत काली जदि देखिए आप ओवरऑल सेक्टर में सबूटा डाउन थिला आज आपंकर जब सेक्टर सेंसेक्स बढ़ी जदि सेंसेक्स बढ़ी से देखिए एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर कॉर्पोरेट बैंक आउ रिलायंस आउ एल&टी आउ मारुति यही सब गुड़ा केतटा कंपनी रे बहुत मात्रा बढ़ी 4% 4.5% पर्यटन बढ़ी आज सेंसेक्स बर्तमान 1000 पॉइंट पाखापाखि ऊपर देखा जाउछि तेणु ए सब को आम देखिले इकोनॉमिकल जो बूस्ट आसवा कथा कारण आमर भारतीय बाजार रे जो पुंजी निवेश जहाँ भी होउछि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो जति निवेश करुले से प्रति हिसाब से बिकी चलते गत काली भी बिकी आज जना पड़ो जे आपंकर रिपोर्ट रे से वेदर से पुणी इंटरेस्ट नौ भारतीय पुंजी बाजार रे इन्वेस्ट करने ना पुणी से प्रॉफिट बुक करने ताऊपर आज डेटा निश्चय डिपेंड कर कारण गत काली 945 कोटी पाखापाखि से बिकी शेयर बाजार रे। ओके शीतलेखा बहुत बहुत धन्यवाद आपको समस्त मतामत पाए।